Yeah, that's right, that's right. Thank you so much for a very loud introduction. My name is Sumukhi Suresh और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके साथ कॉमेडी करने वाली हूँ, आपके लिए कॉमेडी करने वाली हूँ. एंड इनफैक्ट विमेंस डे इज कमिंग, इट्स वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर मी. हम पूरे साल का बोनी अभी करते हैं बिकॉज एवरीवन रिमेंबर्स कि अरे ये लोग बचे हैं, इन लोग को डाल दो. सो इट्स वेरी एक्साइटिंग, दो शो हर दिन. एंड ऑल्सो इस टाइम पे ना सबसे ज्यादा ट्रोलिंग होती है कि ओह लड़कियां सिर्फ बूब्स और वजाइना के बारे में बात करती हैं, सिर्फ ब्रास के बारे में बात करती हैं. एंड मैं आई अग्री विथ यू, ब्रास के बारे में तो जोक्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए, स्पेशली माई ब्रास बिकॉज दे वेरी एक्सपेंसिव. मैं तो इनफैक्ट 4000 वाले ब्रास खरीद रही हूँ और 4000 मजाक नहीं होता है. ऐसी चीजों पे बात करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है. सो आई कंप्लीटली अग्री. एंड इवन इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ पीरियड्स पीपल आर सेइंग कि आप प्लीज आप पीरियड्स पे जोक करते हो. इट्स एक्चुअली इम्पॉसिबल बिकॉज मुझे पीसीओडी है, मुझे पीरियड नहीं आते. इनफैक्ट द जोक इज कि मुझे नहीं आते. तो जब पीरियड पे जोक होते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं. जब ये लोग बोल रहे हैं ना कि पीएमएस हो रहा है, मुझे आई एम लाइक मुझे कुछ नहीं हो रहा है. ओके मोस्ट मैं तो एमएस भी नहीं कर पाई, पीईएमएस तो इट्स इम्पॉसिबल. एंड इन टर्म्स ऑफ ओ थैंक यू, वेरी बैड फेक लाफ्टर, वेरी बैड, बट आई अप्रिशिएट इट. इसीलिए मैं कह रही थी कि हमें इस पे जोक्स करना ही नहीं चाहिए. और वजाना पे जोक्स अभी मैंने वजाना पे जोक्स कर दी तो एफआईआर शायद. ओके गुड टाइमिंग, थैंक यू. Great. थैंक यू This सो is मच. not that show. या था. You are required in that room. ओह we are- इसीलिए इतने yeah, लाफ्टर yeah, नहीं आ रहे थे. yeah, सिट yeah, थैंक गॉड. exactly. मैं बहुत डर गई. Wow. Welcome to the Male Feminist. You will see us there. 36B. यार हमारे पास एक बहुत सुंदर स्पेशल सेगमेंट है, सुपर पावर्ड बाय क्लोविया. वी ब्रेक द टैबू अराउंड लॉन्जरी बेसिकली. Yeah. एंड क्लोविया ऑफर्स अ सॉल्यूशन बेस्ड लॉन्जरी फॉर 9 body types and 50 plus sizes. Okay, yeah. So we talk about this so that their tagline, which is "Happy is my superpower," Yeah. also makes sense to a lot of men watching this. Yeah. So tell me this कि आपके हिसाब से फिर परफेक्ट बॉडी का क्या डेफिनेशन है? You know, मैं जितना भी बाकियों को ब्लेम करूं कि वो मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मैं खुद को भी तो ट्रोल करती रहती हूँ जब देखो. Like I'm never satisfied with anything, or I hate my body every day. Yeah. Like it's lit. You know, it's insane because ये हुडी यूजुअली मैं एक्सेल पहनती हूँ, ठीक है. और मेरा हुडी किसी ने ले लिया तो इनाक्षी हु वर्क्स विद मी शी सेड मैं एक अब भेजती हूँ पर मेरे पास मीडियम ही है ये, तो आप पहनना. से मीडियम कैसे फिट होगा, मुझे थोड़ा ना मीडियम फिट होगा. मैंने पहन लिया, मीडियम मुझे फिट हो रहा है, ठीक है. एग्जैक्टली मीडियम. And today is that is your win for the day. No, what I thought was something is wrong with the hoodie. When I was like, have they marked this as M, but it's actually XL because this doesn't make sense. And I'm still thinking, I'm like something is up. Maybe I should let the merch people know कि hoodies आप लोग गलत ये कर रहे हो और आप लोग ठीक से उसे mark करो. I'm still not believing that I have worn a medium. I thought it'll make you like have a great day. Tomorrow, no, not today. Today I'm just doubting. I was like, it's very Today you you're know. the entrepreneur. By vendor को बोलो. Entrepreneur. First entrepreneur. Second also like मुझे थोड़ी ना medium fit होगा. It's second. Third, it's also the mentality of, you know, the K3J, that line is there, no, that Anjali's, where she says that वो मेरी दुकान हड़पना चाहता है. Where she's like, कहीं वो, हाँ तू सही कह रही है, वो मेरी दुकान हड़पना चाहता है. Never or ever in the point where that could make me feel nice about myself. Yeah. Always about the fact that there is some factor that is going to ruin this moment. So You don't have the answer. I don't have the answer. Only thing I know is, as much as there's a lot of negativity, I know I'm a work in progress. Like I am, and I think most women are that way. Yeah. And I've realized कि as much when I started working out, when I started taking care of my body, leave the weight loss. Actually, it wasn't a lot of weight loss, but it's just I started respecting the fact that, you know, there was ये real, मेरा शरीर है. yeah, and there was real happiness that I could do movement. Like अभी मैं जब workout के लिए जाती हूँ, I play football, which is insane. Where nobody would ever take me in a football team. मैं ऐसा नहीं कि रोनाल्डो की तरह नहीं खेल रही मैं. I'm fuck all only, but just to think that my body is capable of it, and I always thought that it's a slog and it can't do it. It really makes me happy that way. So as much as there are days where I'm sad, this is where female best friends really work out. Like just I think last week or something मैं कुछ तो change कर रही थी. I remember Sumaira just looked at me and she's like, you've lost a lot of weight. She's like, your body looks so different. It wasn't a compliment. She gave an observation. And she didn't say it as a wow, तो कितनी अच्छी लगी है. She said, oh, all your work is, you know, whatever you're working towards is making your body look fitter. And she didn't say it in a, you know, जब आजकल हम बोलते हैं कि हम fit होना चाहते हैं, हम lose नहीं करना. She said it so naturally that it made me clinical observation. Yeah, it made me feel like she's like, oh, even I should get fitter. No, yeah, it makes sense. And because she's a thin girl, and I was like, I can't believe you equalized me with you. Yeah, inspo मैं है तेरी. Yeah, like imagine. I said that's great. Like, am I even? So I think when it comes to loving body, it's like it's a situationship. Yeah. And it has to be a situation that needs to be converted to regular, friendly, fun relationship. Yeah. As a big girl, Yeah. going and shopping for lingerie, Yeah. how conscious were you there? What was the experience like? How has it evolved over the years?
For me, very early on, like I think college, the moment I went to hostel. So the moment I entered girls' hostel, it just like you look at different types of lingerie, you're like, oh मैं ये भी. Like in fact, मेरी window shopping मेरे hostel के वो जो कपड़े जहाँ पे सुखा रहे थे ना, वहाँ पे हम लोग ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. Because I was wearing simple white stuff that my mom. I was like, oh colors होते हैं, ये होते हैं, so. Lace होता है. Yeah, lace तो बहुत बाद में आया. चलो ठीक है, because वहाँ की लड़कियाँ lace and all they used to hide and keep. Because it's also छुपा हुआ, no. And I'm very conscious about my body. But inside I'm like, I'm a rock star. तो मैं बहुत ऐसे multicolor, multi-material. Oh, तो मैंने lingerie मेरी फिट कर, मैंने सेट कर दी थी कि मैं तो अच्छी lingerie पहनूंगी. Very cool. हाँ, because दिखता नहीं है और कोई मुझे मेरा मजाक नहीं उड़ा सकता. Confidence and how you feel when you walk. 100% I do. And 100% I love because people come to me for recos saying that कहाँ से खरीदूं बता. ऐसा? I'm like, I've got this, yeah. Like मेरा, because girls are very strap दिख गया, they're like, and it's insane because we see one strap, we're like, oh my god, oh velvet or something. We immediately know what the bra is. You're into prints? Oh my god. So I'm the person people ask if which one should we pick up. So that really gave me like, I've got this. So lingerie was very early on, at the right time, I think, figured out. No, but like how difficult, because we've heard from a lot of women that finding the right size can Yeah, be an yeah, issue. yeah. तो वो भी एक पूरी ordeal है ना अलग. Yeah, it's a full ordeal also, like, because it's the matter of cup, it's a matter of size. Because And getting tested every year. yeah, you have to. You 100% have to, because your boobs are mostly mismatched. एक ऊपर एक नीचे है. And also just full discomfort. No, you're wearing it the whole day. And a lot of women also get used to pain. And then suddenly when it's comfortable, they're like, bra गलत है. I said, नहीं. आपके पति ने आपको फिर ना छोड़ दिया है. आप खुश हैं. The normal has changed for you. The dark humor aside, I'm so sorry. very important This is line going to there. be पीछे crazy जाके edit. सुनना. सुमन की आपका एक वीडियो मैंने देखा था, dissecting sports bra and different bras. Oh my. लड़की लोग का ब्राओं के साथ लव हिट रिलेशनशिप है क्यों? Because it's pretty also, it's painful also. अगर मैं ना पहनूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे गर्ल्स कुछ ज़्यादा ही फ्री हो गई हैं. फिर मैं पहनूं तो मुझे लगता है कि गर्ल्स कुछ ज़्यादा ही अंदर है. तो it's a very back and forth. Like again, sports bra again. Big fan of sports bra. पर मैं, you get conscious कि sports bra makes you look smaller. It's just so much kitsch we have. We have so much inner monologues ना. But we're big fan of it. अगर आप वो monologue हटा दो तो हम क्या हैं? Yeah. फिर हम फुटबॉल के scores follow up करेंगे? Never. I'd rather have this monologue than anything. It's a proper love-hate relationship for sure, because we are very like, God, मैं bra नहीं पहनूंगी. Ooh, fuchsia bra. I want it. It's a roller coaster for sure. सुमुखी, हमारे ब्रांड पार्टनर क्लोविया ने आपके लिए बहुत कुछ अमेजिंग हैम्पर बना के भेजा है, क्योंकि हैप्पी इज माय सुपर पावर उनका happy कहना. is my superpower. Actually, sadness, but it's okay. But there is happiness and sadness. आप खोल के देखना चाहते हो? Thank you so much. Ooh, oh, look at this. I did not expect this. I love it. Thank you so much, Clovia.